Okay, hello everyone. Good morning, and here we are into another edition. Yeah. So, I hope I am properly audible and properly visible. Right, and things are good, and audio is good, video is good, and that's what we are like going to do today. आज हम analysis करेंगे and थोड़े बहुत question करेंगे and बहुत सारी चीजें. Right. So last Monday, social media, Twitter, and other places में बहुत सारी चीजें ट्रेंड हो रही थी and those trending things were making news. यूजीसी रेगुलेशन हो या जो भी like government and opposition कहो like both were not ready to speak about UGC, but then suddenly everybody started taking credits. Right. And like कहता सुप्रीम कोर्ट है बेचारे भरते जो है वो भरते तो खैर पब्लिक है एंड जब चीजें सही करता है तो क्रेडिट लेने के लिए दोनों आ जाते हैं, जब गलत करता है तो कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गलती थी. सो ओवरऑल फैशन में काफी कुछ है, बट यस वी गॉट सम पर्टिकुलर what we can say great news today on our fundamental right side. The menstruation health जो है वो स्कूल के लिए इंटीग्रल हो गया है, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ लिबर्टी के अंडर. So it's the biggest news of yesterday that you should follow, and it was actually like बहुत जरूरी था. जिस तरीके से इंडिया में जो लैक ऑफ what we can say एक टॉक है इन दिस पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हेल्थ हाइजीन इन सारी चीजों पे बात नहीं होती, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ये एक अच्छी चीज है. बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग रोड हेलो इज गोना ahead because that's don't start the politics. Right. So the thing is, it was a something that we should talk. हाँ, like एक एक्सपर्ट का ये कहना था कल. मैंने उनके ट्वीट पढ़े थे. So it was like कि yes, it might be a good start, but we have a long road ahead. क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के सोशल स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, उसमें काफी लंबी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, जब आर्टिकल सॉरी सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज हुआ था तब ये प्रॉब्लम थी. राइट. जब 498 ए बी इन सब पे बात हुई थी तब भी ये प्रॉब्लम थी. तो यस इट विल टेक टाइम बट सून लाइक वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, that this is something to address. So I believe it's a great decision, right? So let's start with the news of the day. सबसे पहले तो वही है कि जो वो है hello Agastya. I'm fine. I hope you're doing good as well. So the first thing was menstruation health as a fundamental right. Yes, menstrual health as a fundamental right. Okay, so first ये एक सबसे बड़ी न्यूज रही है कल की. देन जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है दिल्ली ब्लास्ट, उसमें वी गॉट सम अपडेट, राइट. उसको वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बोला जा रहा था, तो उस पे भी एनआईए ने कुछ अपडेट्स आपको दी हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. देन यूजीसी के रेगुलेशन पे तो अभी भी बात चल ही रही है, जो कि कंटिन्यू है. सो some people are saying the definition of caste-based discrimination is not correct. It should be strictly like discrimination. क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड बाकी सारी चीजें जो है वो चली रही, प्रोटेस्ट वगैरह चली रही हैं. महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज एनीवन. क्या हुआ महाराष्ट्र का पॉलिटिकल डेवलपमेंट? हम्म. नो. अजीत पवार की जो वाइफ हैं सुमित्रा पवार, राइट, शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट women डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. यस. कई लोगों ने अलग अलग तरीके से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और बाकी चीजें हैं एंड सम लाइक प्रिडिक्शंस जो हैं उनको लगाए थे. एंड वन ऑफ द प्रिडिक्शन वाज दैट शी इज गोइंग टू बी द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सून, एंड दैट केम आउट. यस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 6 फरवरी या 8 फरवरी की डेट लोग कह रहे हैं कि जब वो एनसीपी शरद पवार एंड एनसीपी अजीत पवार दे आर गोइंग टू
merge together. तो ये भी एक particular development है. फिर the opposition is like कि RTI Act जो है, राइट, उसकी फर्दर स्क्रूटनी की जाएगी. पॉसिबल मिनिस्ट्रियल वीटो जो है, इफ यू आर आस्किंग, है ना, या लाइक सम इंफॉर्मेशन, सो मिनिस्ट्रियल वीटो का कॉन्सेप्ट जो है वो आ सकता है. सो आरटीआई एक्ट में जो नए चेंजेस होने वाले हैं, लाइक फ्रॉम माय साइड, लाइक एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हाँ मैं सीख ही रहा हूँ फ्रॉम आर, लाइक तुम्हारे मेंटोर्स, हमारे पुराने मेंटोर्स सभी से. तो आरटीआई को वीक तो किया गया, दैट्स फॉर श्योर. एंड अगर ऐसा भी कुछ होता है तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आरटीआई हमें इंफॉर्मेशन देता है from the government side, because we are the citizen of India and government is answerable to us. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. देन वही रेगुलर इंटरनेशनल अफेयर्स जो आप देखते आ रहे हो, कि भाई साहब रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, अरे तुम बोलोगे सर आज से नहीं लड़ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से लड़ रहे हैं. For now, Russia halts the what we can say strikes on Kyiv as Trump request. थोड़ी देर के लिए स्ट्राइक्स रुकी हुई हैं. देन म्यांमार के लिए यूएन ने रिपोर्ट निकाली है कि एटलीस्ट 170 civilians are killed during the election. Yeah, airstrike and other particular thing. Right. And वेनेजुएला के लिए ये है कि वेनेजुएलन एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है, दैट्स डेल्सी रॉड्रिगेज, उनके साथ मोदी जी ने बात की है. एंड लाइक दिस इज द फर्स्ट टॉक आफ्टर द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो, technically the president of Venezuela. So these are the major news जो आपके उसमें आई हैं, राइट. एंड ये कंटिन्यू चलने वाली हैं. रशिया यूक्रेन भी कंटिन्यू चलने वाला है. म्यांमार का इशू थोड़े थोड़े दिन में अब खत्म हो जाएगा. बट वेनेजुएला इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस इन न्यूज, क्योंकि जिस तरीके से हुआ है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी मिस्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज menstrual health and in school, and right to life, liberty, etc etc. So सबसे पहले बात करते हैं what is a menstrual health concept, right. The thing is, there are some particular days in the month जब women's जो हैं, जो girls and women's हैं, they are in periods. During that time there are like some basic issues, hormonal imbalance, uh, what we can say, bleeding problem, cramps, pains, mental health. There are a lot of things जिससे एक महिला को गुजरना पड़ता है, राइट. एंड इफ अगर मैं कुछ सालों की, पिछले कुछ सालों की बात करूं, तो पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को क्वेश्चनेबल बना देता है. फॉर एग्जांपल, लाइक फ्यू मंथ्स बैक देयर इज दिस पर्टिकुलर गर्ल हु वाज गिवन एन एग्जाम, बट शी वाज इन पीरियड, तो उसे क्लास के बाहर बैठा दिया गया. देन देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर इंसिडेंट्स जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ड्यूरिंग दिस टाइम. And irrespective of understanding this, that this is the process, this is the first particular thing that should come in everyone's mind, कि this is the process because of which our race survive. If a girl is not having a period, it's a problem because medically she cannot produce eggs and she cannot become a mother, और वो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, राइट. दो अगेन इसका एक अलग डिस्कशन हो सकता है, बट हाँ, अभी मेडिकल फैसिलिटीज एंड मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग है, वी कैन डील विद दैट. बट इंडिया में सोशल इन्फ्रा इतना स्ट्रॉन्ग है, सोशल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि दे आर लाइक नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. रेशपना लेट्स गो फॉर द बेस्ट बच्चे, मतलब लाइक मैं तो अपनी जॉइंट फैमिली में, हमारे यहाँ वी हैड 9 sisters, वी हैव 9 sisters. I grown up in a joint family and I can understand what can be things like in that particular time. I have an elder sister who's a doctor, gynec, so she tells me a lot. Right, I have friends जो इस particular issues पे बात करते हैं, how they face, how they feel pain. So yes, it's definitely a problem, and it should be implemented very properly. But वही है ना, मैंने वही तो बात की, the social structure is so strong कि हो सकता है इसको accept करने में काफी time लग जाए. But I believe if we get into a proper awareness setup, not only for women, for men also, then this thing can be very like this can be implemented very properly.
तो ये तो रहा मेरा पर्सनल ओपिनियन. I believe this is a very welcoming judgment from Supreme Court, and it's historic. See, at least we started talking about it legally. Yes. Daksh, मैं वही तो बोल रहा हूँ. The problem is people are not ready to talk about it. Awareness तो दूर की बात है. Right? So, if we want these things to be in well particular, like, if we want to implement it in well manner, then awareness and like direct talks with the teenagers and the kids, irrespective of their gender, we should talk about it very properly. Right? तो ये चीज है. खैर. Yeah, I have seen those things. मतलब, I'm not sure कि ये किसको कैसे हैंडल करते हैं लोग. So what we can say, मतलब ऐसा लगता है कि I live in like still live in 1950s. So that's ठीक है. तो अपन बात करते हैं, मेड सम प्रॉपर नोट्स कि क्या मैंडेट आया, क्या चीजें हैं. तो विल टॉक अबाउट. सो ऑन जनवरी 30th, दिस 2026. This was the 10th anniversary of Bapu. Bapu इक्वालिटी के बहुत बड़े एडवोकेट थे. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेलकमिंग. डेट भी उन्होंने काफी अच्छी चुनी. Supreme Court of India declared that the right to menstrual health is an integral part of fundamental right to life and dignity under Article 21. Right? So Article 21 के अंदर उन्होंने राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अंदर मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एक इंटीग्रल पार्ट बताया. This judgment came after Jaya Thakur versus Union of India. Yes, उन्होंने सिंपली ये बात बोली. द सोसाइटी शुड सी द शिफ्ट फ्रॉम व्यूइंग मेंस्ट्रुअल एंड हाइजीन एज अ वेलफेयर मैटर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. उनका सीधा कहना था कि अब उसे वेलफेयर मैटर की जगह हमें उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के फॉर्म में देखना चाहिए. दिस वाज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. नाउ क्या है, किस तरीके से किया गया. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो हमने कोर्ट के उससे सुना, दैट वाज लाइक द कोर्ट हेल्ड दैट menstruation related stigma and lack of facilities lead to structural exclusion, violating the right to equality, that is article 14, and the right to education 21A, article 21A. सो इन्होंने राइट टू लाइक आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21A को स्ट्रिक्टली कोट किया है, जो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू एजुकेशन प्रूव करता है. डिग्निटी एंड प्रिवेसी, उनको भी इन्होंने बहुत प्रॉपर्ली कोट करते हुए कहा है. इन एक्सेसिबिलिटी टू द हाइजीन right measures was ruled to undermine the dignity of a girl children as a of privacy as the right to live without humiliation. सो दीज आर समथिंग जो एक बहुत बहुत लाइक बढ़िया स्टेटमेंट है, कहनी चाहिए बोल्ड स्टेटमेंट है इन आवर सोसाइटी, कि हम एक लड़की की डिग्निटी को, एक लड़की की इक्वल पार्टिसिपेशन को ह्यूमिलिएशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी को भी उन्होंने कोट किया है, एंड राइट टू इक्वालिटी को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि जस्ट बिकॉज वी आर लैकिंग एनी फैसिलिटी इन द स्कूल, जो इक्वल पार्टिसिपेशन है वुमेन का, जो लाइक एक्सक्लूजन के कारण नहीं हो पाता, दैट इज अगेन रॉन्ग एंड आर्टिकल 14 का वायलेशन है. और अगर एजुकेशन में इस पर्टिकुलर रीजन के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो आर्टिकल 21A का भी क्या है, वॉयलेशन है. So this is like a very regular, very simple and very particular कहना चाहिए logical thing to tell. Second, जो बेंच थी उसमें जस्टिस बीपी पार्डीवाला एंड आर माधवन थे. They use the following structure for the schools. अब जो स्कूल्स हैं उसमें उन्होंने क्या पर्टिकुलर मैंडेट और क्या गाइडलाइन दी है, डायरेक्शंस दी है. मैंडेटरी गाइड डायरेक्शन की बात करूँ, सॉर्ट की आप देख लो, कर सकते हो तो कर लो. So first thing they said, you are supposed to provide a free sanitary pad. So school must provide free OXO biodegradable sanitary napkins to the girls from class 6 to 12th. Yes, that is supposed to be OXO biodegradable sanitary pad. क्लास 6 से 12th तक की लड़कियों को ये आपको फ्री सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने पड़ेंगे. Then you have to develop the infra.
यस, उनका मानना है कि एवरी स्कूल मस्ट हैव अ फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड एंड disabled friendly toilet with water and soap, राइट? नेक्स्ट उन्होंने बोला है स्कूल मस्ट established MHMs, right? That is menstrual hygiene management, right? Concerned equipped with spare innerwear, uniform, disposable bags for emergency. तो उनका ये कहना है कि हर एक स्कूल में एक MHM या menstrual hygiene management setup होना चाहिए. And they should have a spare, what we can say, part, which may include innerwears, uniforms, disposable bags for the emergencies. So that is another thing. Moving on to the next one. They also like directed for the waste management. Yes, they said the safe and environmental friendly, compliant the disposable mechanism must be installed कि जब भी वेस्ट मैनेजमेंट की बात आए डिस्पोजल करने की बात आए तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सेफ मैकेनिज्म जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड द लास्ट वन इज सैनिटेशन. यस, उन्होंने बोला कि जो भी एनसीईआरटीज हैं या एससीईआरटीज हैं मतलब स्टेट और नेशनल लेवल पे जो बुक्स हैं दे आर डायरेक्टेड टू इंक्लूड जेंडर रिस्पॉन्सिबल करिकुलम टू ब्रेक द taboos. Crucially, boys and male teacher must be sensitized, right, to prevent harassment and ensure an empathetic environment. Right? Okay, so I had this. Oh, that's a good thing. It was cheap, but not too completely free. Let's hope for the best. They improve the quality after this. Like, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो उनका ये कहना है कि एनसीईआरटीज और एससीईआरटीज जो है उसमें एक प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए एंड द मेन टीचर शुड बी सेंसिटाइज लाइक उनको सेंसिटिवली इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये चीज है सो दैट वो प्रिवेंट कर सके हरासमेंट दे शुड इंश्योर एन एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट. अब ये तो हो गई जो डायरेक्शन स्कूल्स को दिए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट. Then they mentioned about the कि अगर compliance और मतलब accountability और implementation को किस तरीके से वो करना है. So उनका सीधे कहना state and union territories must file a compliance report within 3 months. So उन्होंने state और union territories को डायरेक्ट किया है कि you should file the compliance and report within 3 months. Then consequences. Private school failing to comply face de-recognition. So अगर कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है तो दे डेफिनेटली गेट इनटू दिस. बट जो प्राइवेट स्कूल है अगर वो फेल करते हैं इसके कंप्लायंस में तो दे कैन फेस व्हाट वी कैन से डी रिकॉग्निशन उनका लाइसेंस वगैरह जो भी होता है प्रोसेस वो कैंसिल हो सकता है. District Education Officer (DEO) must conduct a period inspection and obtain anonymous feedback from the student to ensure the standards are met. So यहाँ पे फीडबैक का भी उन्होंने मैकेनिज्म किया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो 2023 का वो था ईयर था उसमें दे क्लैरिफाइड द mentioned leave policy matter for the government to decide rather than a judicial mandate to avoid the potential hiring discrimination against women. सो जो जॉब है जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए मेंस्ट्रुअल लीव राइट इसके बारे में जो वो है क्या कहना चाहिए लॉ बनाने के लिए बात की गई थी. तो दे वांटेड द गवर्नमेंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस क्योंकि अगर महीने में 3-4 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव मिलने लगे तो कंपनी वुड लाइक somehow will feel like कि नहीं यार महिलाओं को हायर करने की जगह मेन को ही हायर करते हैं क्योंकि कम से कम उनको मेन मतलब जो महीने में 2-3 दिन है उनकी छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी. Right, so there is a concern of discrimination for the menstrual like leave. So उन्होंने बोला कि आप एक प्रॉपर लॉ बनाएं जिससे डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो. तो these are something जो चेंज है. Daksh, I'll do it today, don't worry. And this was like proper written judgment and it was like men in menstruation, yeah, right, MHM concerned. This was a good article. I think you should follow it. Yeah, right. तो उन्होंने स्कूल्स के लिए भी गाइडलाइन मेंटेन की है उन्होंने अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस के लिए भी मैकेनिज्म सेट किया है. तो इट्स लाइक ओवरऑल
this is going to be a good decision, good judgment, right? So this was the best news for today. Then we get into the Delhi Red Fort blast. uh, बहुत सारी चीजें निकल के आई जो एलेबोरेटेड प्रोब हैं उनमें अलग अलग तरीके से बात हुई है. सो मैं सिंपल वो कर देता हूँ कि जो नवंबर 10 2025, यस, लास्ट से नवंबर 10 2025 को जो ब्लास्ट हुआ था, it actually revealed a very sophisticated network of highly educated professionals, like doctors, engineers, who are planning series of high profile attacks. तो दिल्ली रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट था उसमें इन्होंने एक हाई प्रोफाइल नेटवर्क वो किया है जिसमें वेल एजुकेटेड पीपल वर एक्चुअली हैविंग a very proper planning for high profile blasts, right? The mastermind of the bomber, Dr. Umar Nabi, from the Pulwama, he was the one with the confirmed DNA test, right? And Madam Surgeon, जो एक सीक्रेट नाम आ रहा था उनको भी डॉक्टर साहिन सईदा, रेसिडेंट ऑफ लखनऊ एंड टीचर है अल्फाता यूनिवर्सिटी, allegedly act as the central figure raising funds and managing the code word communication with the medicine referred to the explosives. तो ये वो लोग हैं जो explosives को medicine कह रहे थे, right? Alfada University was also termed as the recruitment hub. This was the place जहाँ पे कि level पे modules के लिए recruitment हो रही थी. And radicalization जो है वो the radicalization of the youth was directly linked to जैश ए मोहम्मद, कि उनके आर्टिकल्स, उनके लिटरेचर के थ्रू वो रेडिकलाइजेशन होता था, राइट? या डेफिनेटली दैट वो तो होता ही है ना. तो ये सारी चीजें जो हैं ये उन्होंने वो किया ना. एक ब्रॉडर प्लॉट जो है वो निकल के आया. ये सारी चीजें तो उस टाइम पे भी बहुत हद तक क्लियर हो गई थी, बट नाउ दे आर कंफर्म. This was not like the 10th November blast was not just a random blast, right? They had a very strategic planning. They had target beyond that fort. जो recent report है वो indicate करती है the module plan to on strike outlet on the global coffee chain. Reportedly, Starbucks to protest against the military action in Gaza, given the founder's Jewish heritage. So उनका ये कहना था, मतलब उनका ये मानना है कि जो Starbucks है, reportedly Starbucks, correct, which is an international star chain. So it has a Jewish founder. So गाजा में जो military action, गाजा में जो चीजें हो रही हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए they have targeted one of the Starbucks जहाँ पे वो blast करना चाहते थे, right? Uh, Approximately 2,900 kilograms of explosive, including ammonium nitrate from Faridabad, just hours after the initial blast, ये भी रिकवर किया गया था. And a recruitment failure भी कहीं कहीं देखने को मिले. There are some people who actually talked about it कि हमें भी इस तरीके की बात की गई थी, but हम इस सारी चीजों में नहीं पड़ते हैं. We backed out from that. So they get to know, like they got a very proper network कि किस तरीके से वो काम करते थे. And they had an advanced planning. उन्होंने host SIM card, राइट, जो टेलीग्राम ऐप है, जो सिग्नल ऐप है, राइट, इन सारी चीजों की बात की थी. They used code word like medicine, biryani, chicken tikka, and some other particular thing. They coordinated with the Pakistan handlers. So it was not just a random like syndicate, what we can say, doctor's racket. It was a very proper module with a highly educated person, and they had a very what we can say strategic planning for coming years. And for now, NIA have like arrested 15 people in this particular case. And there are two major concerns इस पे अभी भी बात चल रही है. The one is Bangladeshi connection. Yes, there are people who are somewhere who are concerned that there is a Bangladeshi connection as well after this Sheikh Hasina situation. तो उनका बांग्लादेशी कनेक्शन की भी बात हो रही है. And उनके लिए like Ansarullah Bangla, that ABT, they have also identified कि इनके साथ भी कनेक्शन था. And जो डॉक्टर प्रियंका हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, जिसमें 8 लाख रुपए वो किए थे, फंड किए थे फॉर द मॉड्यूल फॉर प्रोक्योरमेंट. So there are like series of arrests, there are series of revelation that is going on in this particular case. Netflix web series type thing.
दक्ष, तुमने आइडिया दे दिया। आई कैन नॉट से कि कल को नीरज पांडे उठ के इस पे एक वेब सीरीज बना दे। चलो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। सो सुनेत्रा पवार जो है इज सेट टू बी द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द डेथ ऑफ former डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, राइट। उनको जो नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के जो लीडर थे, जो मेंबर्स थे, दे डिसाइडेड दैट सुनेत्रा पवार शुड लीडिंग द पार्टी एंड शुड बी द deputy chief minister of Maharashtra. So she is going to take oath most probably on today, right? There can be cabinet reshuffle as well. Huh. So Chief Minister Devin Fernandez has taken charge of the crucial financial portfolios interimly. Sunitra Pawar is expected to retain the excise and sports portfolio previously held by her husband, and जो पार्थ पवार है, son of Ajit Pawar, most probably he is supposed to go to Rajya Sabha, right? Yes, क्योंकि अगर उनकी मम्मी यहाँ पे आती है तो वहाँ पे एक सीट वैकेंट होगी, तो ही इज गोइंग टू बी द वन जो फुलफिल करेगा, ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं दिस पर्टिकुलर थिंग की, रीयूनिफिकेशन ऑफ एनसीपी, है ना। Before the death of Ajit Pawar, it was reportedly in talks with the Sharad Pawar faction of NCP. Right, some leader push it for like the reunification. Okay, hello Anurag, है ना। उनका ये मानना था लाइक लीडर्स लाइक छगन भुजबल, दे सजेस्टेड द इमीडिएट लाइक जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यूनिफिकेशन पे होनी चाहिए। They are seem like supposed to have a legislative meeting by the 2 p.m. today. So let's hope for the best कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब डिवाइडेड पार्टी से बढ़िया यूनाइटेड पार्टी, whether they are supporting government or sitting in opposition. So I believe पार्टी तोड़ना that is something जो कि गलत है। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा हो कि पार्टी वापस जुड़ जाए, तो वो चीजें चल रही हैं नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Stalin denies the charges of dynasty politics, grafts and Hindu bias. So ये स्टेट न्यूज में है, स्टालिन को हमेशा एंटी हिंदू बुलाया जाता है, तो स्टालिन ने इस चीज से डिनाई किया। लेकिन सुनेत्रा पवार जो है उनका नाम आ चुका है, सो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। असम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है उन तीन अक्यूज की जो जुबीन गर्ग डेथ केस में अक्यूज्ड है, राइट। हाँ, यस। सो देयर वर थ्री पीपल जिनको अरेस्ट किया गया था। तो जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, उनका बेल रिजेक्ट कर दिया है। केरला में 2 days कॉन्क्लेव दैट विल फोकस द इंक्लूसिव टूरिज्म, वो स्टार्ट हो चुका है। UGC rules, equity rules flow from the Article 15's mandate to remedy the historical injustice. So UGC का जो particular equity rule है वो अभी भी गया नहीं है, मतलब the thing is I told you yesterday. For now it is in like it stays. Supreme Court ने stay लगा दिया है, 19th of March में they will get to hear the next particular part of it, right? And then जो है पता चलेगा कि इसको रखना है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे वगैरह वगैरह। ओके, एंड देन अगेन वही पॉलिटिक्स, विल इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल सेज बीजेपी ऑन ईजीसी रेगुलेशन रो। सो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो अब जाके निकली है पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह से। लेट्स नॉट डिस्कस दिस, ओके। जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने बोला कि विल इजेक्ट इन्फिल्ट्रेटर्स वन बाय वन से शाह इन पोल बाउंड असम। असम में जाके उन्होंने बोला कि जितनी भी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम उन्हें वन बाय वन करके असम की धरती से, असम के लैंड से बाहर कर देंगे, राइट। द स्टेटमेंट इज कमिंग बिफोर द असम इलेक्शन, Sarmak. PM Modi speaks to Venezuela's acting president, that is Delcy Rodriguez, and he took uh, the
You talk about the future of Venezuela. You talk about the relations between India and Venezuela and how the existing relation can be better, etc., etc. एंड ये आर्टिकल जरूर पढ़ना है ना. लेबर इंटेंसिव सेक्टर टू बी बेनिफिट फ्रॉम ईयू इंडिया एफडीए. कल इत्तेफाक से आई गॉट लाइक 2 3 articles relevant to the India EU FTA. It was like I guess so when I was having dinner, and there are a lot of questions that is being asked. I told you that this is still to be signed, implemented, or ratified by the European Union. So it will take time, like at least 6 to 12 months. And after that, how they are going to do. So one of the statement from the Piyush Goyal, Ministry of Commerce, said it will increase the employment in the clothing sector by 60 to 70 lakh. Right? He never mentioned how, but he said this. And similar sort of thing happened in 2019 when they allotted 8,000 crores for the same sector with the target of increasing the employment of 60 to 70,000, 70 lakh. But they never gave a further data that what was the case of uh, like employment after that particular, what we can say, funding. Secondly, we also are like now the experts are saying that it won't benefit the very core of common men directly. The thing which are getting cheaper from EU is luxury cars and wines, and this can be benefited for the middle class if they want to pursue education, want to do job in European Union. So that is one thing that is going to be preferred. Apart from this, one more questionable aspect was the largest largest exporter for cotton-based material is China to EU, right? EU के लिए सबसे बड़ा जो exporter है, सबसे बड़ा partner है, that is China. But the government is comparing the like Indian scenario with the Bangladesh. So that is something which is not correct. Some लोगों का मानना था कि if we are targeting a larger benefit, larger profit from the EU-India FTA, the target should be China, right? Not Bangladesh. Yes, Bangladesh is least developed, comes under the LDC, least developed country, and it gets benefit of tariffs. Now we are getting benefits of tariff, like lower tariff, so we should target the market of China, not Bangladesh, because it is having like close to $200 billion market. तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए तुम्हें, सो मेक श्योर कि इसको पढ़ना. नाउ मूविंग ऑन टू द टू बिग लाइक कंसर्न स्टेटमेंट बेस्ड न्यूज है, सो उसमें डेटा तो क्या ही होगा. सो फर्स्ट, महात्मा गांधी's idea cannot be erased, says leader of opposition Rahul Gandhi, right? And Modi ji के स्टेटमेंट थे कि his personality and deeds will continue to inspire people. गांधी जी के लिए उन्होंने लिखा है because yesterday was the death anniversary. कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि मोदी अपोजेस मनरेगा एज इट वाज एसोसिएटेड विद द महात्मा गांधी. सो चल रही है स्टेटमेंट स्टेटमेंट पॉलिटिक्स. आरटीआई के बारे में बात करी है हमने कि क्या आरटीआई को वीक करने की प्रोसेस की जा रही है. सो मैंने तुम्हें बताया कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है एंड सम अदर पर्टिकुलर थिंग है, उसमें कहीं ना कहीं आरटीआई की वीकनेस थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाई जा रही है. सो इफ समथिंग लाइक दिस की मिनिस्ट्रियल वीटो मिल जाएगा तो ये और वीक हो सकती है. स्टिल दिस इज एन फेस जो कहीं ना कहीं अभी पाइपलाइन में है. सो इफ वी गेट समथिंग लाइक दिस तब फिर बात करते हैं. ठीक है. Now, stem cell therapy cannot be offered as the clinical services for the autism, said Supreme. Another historic aspect in which Supreme Court discussed was autism. You know what is autism? Anyone? Anyone? No? Okay. Mm. So there is like a regular functioning for a healthy human being. For example,
uh, the grace of God, we can speak properly, we can communicate properly, we can move properly, right? We can learn things very properly. But there are some particular kids who got autism जिनमें ये process थोड़ी सी slow हो जाती है. You're right. And people believe that the stem cell therapy can help fighting autism. So the autism spectrum disorder ASD से लड़ने के लिए हमें stem cells का use करना चाहिए. ना ना, ईशान नंद किशोर अवस्थी was dyslexic. That's a difference between dyslexia and autism, right? Learning new thing, as in like complex mathematics or something like this. So in dyslexia, there are huge chances that the IQ must be like higher than common people. For example, Tom Cruise is dyslexic, so he got a problem of remembering the dialogues, but he can perform stunts, exceptional stunts by himself by remembering the steps. So वो अलग चीज है ना? Yes. तो हाँ मतलब वो वैसा है कि लर्निंग स्पीच मूवमेंट एंड अदर थिंग्स जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं उनके लिए उनको प्रॉपर थेरेपी लगती है वन ऑफ माय फ्रेंड is a doctor and she take care of the kids जो autism से हैं. So she used to be like like dude, the problem is with the social acceptance and acceptance that there is a solution. So technically autism को क्योर करने का कोई भी अब तक अपने पास वो नहीं है, मेथड नहीं है, बट राइट. Yes, very correct, Rashpana. But there are therapies and there are regular sessions which actually can improve the condition of a kid. So the first thing that we should accept that they need help, right? With the therapy, with the other thing. And they are normal. Like that's completely normal to accept those people. And they can improve. Recently there was this particular movie, Star is Zameen Par. I hope you guys, one of you at least watched it. उसमें भी ऑटिज्म का ही वो दिखाया गया था. And Sitare Zameen Par was dyslexia, and Sitare Zameen Par was autism. Though there are some people who are claiming that stem cells can help them learning the regular things better. Stem cells therapy can cure the autism spectrum disorder (ASD). But Supreme Court says we cannot offer it as a clinical service or clinical trial because it doesn't have a strong what we can say reference. So जो था मैं उसको बता देता हूँ. The autism outside of approved the clinical trial was demanded, and this is like unethical medical malpractice, right? This is what court says. This is the lack the scientific support of evidence for the therapy and its effectiveness and safety in treating ASD. It is also noted that ASD is a complex condition with no known cure. Current routine treatment consists occupational, speech, behavioral therapy. The court also found that due to absence of established safety and efficacy data, obtaining valid information and valid like informed consent is not possible. So, what are the process जब हम autism की बात करते हैं तो जो मेरी friend है she was like कुछ नहीं, you have to visit regularly with the parents क्योंकि पूरे दिन बच्चा डॉक्टर के साथ नहीं बिता सकता. पूरे दिन बच्चा अपने पेरेंट्स अपने घर वालों के साथ बिता सकता. So they actually prefer कि different house member family members should be present so that they can understand how to deal with this. If the things and therapy get normal, the people like the person who's suffering from autism it get better and better. So they wanted like some of them like उन्होंने बोला भी है कि promoting the stem cell therapy as a miraculous cure, but अभी तक उसका कोई strong clinical evidence नहीं है. तो उन्होंने नेशनल कमीशन मेडिकल कमीशन को एम्स को ये भी डायरेक्ट किया है कि इफ यू कैन लाइक गेट सम पर्टिकुलर डेटा तो आप उस डेटा के बेसिस पे बात करें देन उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल की बात कर सकते हैं. And they also referred the global perspective. Right, international organization like World Health Organization and International Society for Stem Cell Research, which caution against the clinical use of stem cells for autism due to potential risk and lack of evidences.
सो यही कहना है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी पोटेंशियल रिस्क और लैक ऑफ एविडेंस के थ्रू इसको नहीं यूज करना चाहते, तो आप क्यों करना चाहते हैं? तो दैट वाज व्हाट स्टेम सेल्स एंड ऑटिज्म। अगेन सेम थिंग है। ऑटिज्म के लिए फर्स्ट थिंग जो होना चाहिए वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ हम एक बच्चे को एक्सेप्ट करें कि हाँ इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग इज एक्सेप्टिंग दैट इफ वी गो थ्रू रेगुलर बिहेवियरल स्पीच थेरेपी द पर्सन कैन गेट बेटर, and a normal human being and a person suffering from autism, we are having just one particular difference. We can do normal things according to society, which is speech, uh, like doing the regular chores of the like house, but they cannot. So if they can do it with the regular therapy, they can also become normal. So वो acceptance की बात है. First thing we should have acceptance, right? Make sure आज के editorial जरूर पढ़ना, है ना? चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे पे हो, चाहे पाकिस्तान के 27th अमेंडमेंट पे हो, जो एक्चुअली आसिम मुनी को एक एब्सोल्यूट पावर दे देता है, राइट? है ना? हाँ, फिर वो जो इक्विटी रूल्स हैं उस पे भी उन्होंने लिखा है। सो मेक श्योर कि ये वाला पेज आज जरूर पढ़ना। क्रैक ऑन कैंपस, यूजीसी 2026 के रेगुलेशन के बाद कैंपस में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है, क्या गुस्सा पड़ रहा है, क्या रेगुलेशन कह रहा है, क्या पब्लिक समझ रही है, इसमें बहुत बढ़िया वो दिया हुआ, तो इसको भी पढ़ो, बहुत मजेदार आर्टिकल था। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल न्यूज। बिजनेस न्यूज में तो कुछ खास नहीं था, हाँ इंटरनेशनल न्यूज में देयर आर सम पर्टिकुलर थिंग्स। फॉर एग्जांपल जो पैलेस्टीनियन मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हम शुड ज्वाइन पीएलओ, yes, Palestine Liberation Organization, and subscribe to its mandate, जो भी पीस बोर्ड ऑफ पीस है उसका रेफरेंस देते हुए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट्स फॉर श्योर। ओके, चाचा ट्रम्प का एक नया स्टेटमेंट आया, ईरान वांट्स टू मेक अ डील टू अवॉइड मिलिट्री एक्शन। एक साइड ईरान कह रहा है द फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर, एक साइड अमेरिका कह रहा है कि द ईरान इज अफ्रेड एंड रेडी टू मेक अ डील। Too much cinema, these days in world. Okay, US changes leadership of Gaza mission, uncertainty overruled. Former जो CNN anchor थे, Don Lemon, he was arrested in the Minneapolis protest, वही जो ICE के against हो रही है. China coastal guards patrolled the islands held by Japan almost daily last year. ये भी एक न्यूज आई है। म्यांमार वाली न्यूज भी have already discussed, रशिया वाली अपने से अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अ, अ, एक बार ये पढ़ लेना, अर्ली वार्निंग फॉर apocalyptic wasteland in the Gaza blocked by the US envoy to Israel, इसको देखना एक बार। एंड रेस्ट स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था। एंड लेट मूव टू क्वेश्चन आंसर। रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर गाइस? The only hero and villain is Chacha. No, Chacha is not at all hero, है ना? Yes, I don't think he is like a hero material. He can be an anti-hero material, villain तो बिल्कुल नहीं है वो। क्यों? मतलब he can dance, he can like have a very lavish life, वो होता है ना, तुमने डांस देखा होगा ट्रम्प का। सो हीरो तो बिल्कुल नहीं है, एंटाई हीरो कह सकते हो। और विलन वाला मटेरियल नहीं है, कम ऑन, ही इज एंटरटेनिंग अस। कह सकते हो, द ट्रम्प sneezes rest of the world gets grab their face mask. When Trump sneezes, the rest of the world actually grab their face masks and also the earbud. खैर, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड that access to menstrual hygiene management in the school is part of which fundamental right? किस फंडामेंटल राइट में, किस मौलिक अधिकार में स्कूल्स में जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है उसे वो किया गया, मतलब कंपलसरी किया गया है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 14, 15, 19, 21। बताओ। In his own world and thinking he's hero. Didn't you get it? इसने नॉर्वे से ये बोला था कि अगर तुमने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया नोबेल कमेटी से, सो अब अगर वर्ल्ड में पीस नहीं है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। यस, वेरी करेक्ट गाइस, आर्टिकल 21।
है ना। आर्टिकल 14 की बात उन्होंने तब की थी जब इक्वालिटी की बात आई थी। यस, सो इक्वालिटी इन द सेंस कि इफ अ गर्ल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेगुलर पर्टिकुलर एजुकेशनल एस्पेक्ट तो वो एक इक्वालिटी वायलेशन है, सो उसको इक्वालिटी में रखेंगे। नेक्स्ट, according to Supreme Court, the denial of a menstrual hygiene facility in a school is like violates which of the following, right? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार डिनायल ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटी किस चीज को वॉयलेट करती है? ऑप्शंस आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रिवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी। बताएं। नो, बच्चे डिनायल ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटी, राइट, राइट टू प्रिवेसी का भी डिनायल है ना यहाँ पे, राइट। नॉट अवेल कराना मतलब अगर हो ही नहीं तो दैट इज समथिंग जो राइट टू इक्वालिटी का वॉल्यूशन होगा, बट यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सेसिबिलिटी को, तो दैट इज सपोज टू बी राइट टू प्रिवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। ठीक है। ओके, चले नेक्स्ट। Which act makes it mandatory for school to have separate toilet for boys and girls as referred to by the Supreme Court? कौन सा एक्ट है जो ये मैंडेटरी करता है कि स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स टॉयलेट शुड बी सेपरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शंस आर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बताओ। हम्म। दक्ष, पॉक्सो पॉक्सो कहाँ से आ गया यहाँ पे? कम ऑन, पॉक्सो इज अ क्रिमिनल एक्ट, राइट, जिसमें बच्चों के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनको क्रिमिनलाइज किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज एसोसिएटेड विद द क्राइम विद द जुवेनाइल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ विजन पॉलिसी जिसमें नेशनल एजुकेशन कैसे इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे एक्यूरेट आंसर है वो राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर ये मेंशन किया गया है द बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव अ सेपरेट टॉयलेट, राइट। यस। चले आगे बढ़ते हैं। आई मीन इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द आंसर डायरेक्टली, एक बार ऑप्शंस बहुत प्रॉपर्ली सोचा करो एंड ट्राई टू अलाइन इट विद द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन, उससे काफी हद तक आंसर्स मिल जाते हैं। Right, moving on to the next one. Which writ petition led to Supreme Court's ruling on the menstrual health in school? Right? कौन सा जो पर्टिकुलर रिट पिटिशन है उसने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन स्कूल के बारे में जजमेंट देने के लिए वो किया? ऑप्शंस आर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय यूनिसेफ, पिटिशन बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, पिटिशन बाय द डॉक्टर जया ठाकुर, सुओ मोटो एक्शन बाय द कोर्ट। बताओ। वी हैव डिस्कस की कौन सा केस था, केस का नाम क्या था, है ना? बताओ। डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। लिखा भी था, तो थोड़ा इसको फॉलो करो। वेरी गुड गाइस। चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द हायर एजुकेशन institutions, like regulation 2026 draws constitutional strength primarily from, जो 2026 का यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 है, वो प्राइमरली किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 14, 19, 21, 15। बताओ।
ये तो इजी हो गया यार। नो। दक्ष, ओके। हम्म। Okay, so Article 19, Article 21 तो नहीं हो सकते. One of associated with the freedom, another one is associated with the right to life, liberty. Now, Article 14 is about the equality, right? Article 15 talks about the positive discrimination. So, equality was that particular base जिसकी basis पे इसका opposition हो रहा था, राइट, कि ये इक्वल नहीं है। 15 इज समथिंग जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है, जिसके कारण एक स्पेशल पर्टिकुलर जो वो है पार्ट है ऑफ द सोसाइटी है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? चले आगे बढ़ते हैं। द स्टेम सेल थेरेपी फॉर द autism spectrum disorder ASD was disallowed by the Supreme Court except when। कब सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी के लिए स्टेम सेल थेरेपी? राइट, अप्रूव्ड बाय पेरेंट, कंडक्टेड बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, और कंडक्टेड अंडर अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल। ये जनरल नॉलेज से ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। आई बिलीव यू कैन डू इट। वेरी करेक्ट, दैट इज डी। यही कहना था, एम्स वगैरह को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जब आप प्रॉपर डेटा लेके आ जाएं तब हम कंडक्ट करेंगे आपको क्लिनिकल ट्रायल के फॉर्म में। वेरी गुड गाइस, proud of you, genius guys. Moving on to the next one. Which central agency is investigating the Red Fort car bomb suicide blast case 2025? Right? So Red Fort car blast case, suicide blast case 2025 को कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है? ऑप्शंस आर सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एनआईए, या इंटेलिजेंस ब्यूरो। वेरी गुड, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज एनआईए। अपन ने बात भी की थी कि उन्होंने 15 पर्सन को अरेस्ट भी किया है बकायदा। ठीक है, नेक्स्ट। अंसार गजवात अल हिंद इज लिंक टू विच ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? इनका भी नाम जुड़ा हुआ था, राइट? सो अंसार गजवात अल हिंद इज लिंक टू विच ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? आईएसआईएस, अल कायदा, तालिबान, बोको हराम। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये। करेक्ट आंसर इज अल कायदा, राइट? यस, अल कायदा से एसोसिएटेड है ये। आईएसआईएस तालिबान या बोको हराम से नहीं। तालिबान इज टेक्निकली अ फ्रेंड एंड डिप्लोमेटिक पार्टनर ऑफ इंडिया, राइट? बोको हराम is active mainly in northern Africa. ISIS almost ended. Al Qaeda is still struggling. So that particular part is Al Qaeda. Answer should be Al Qaeda. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं। Under the Prevention of Money Laundering Act, that is the PMLA, which agency is attached assets of worth 5 crore in a disproportionate asset case? So PMLA के अंदर कौन सी एजेंसी जो है वो 5 करोड़ के एसेट जिसने सीज किए हैं? ऑप्शन है सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, दैट इज इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और एसएफआईओ। बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? आंसर चाहिए प्रॉपरली। नो, तक्ष। जब भी पीएमएलए की बात आएगी, है ना, जब भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, उस टाइम पे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो लीड करता है। ठीक है। हाँ, बाद में वो केस सीबीआई को ट्रांसफर हो जाए, बाद में कुछ और हो तो वो अलग चीज है, बट वेन एवर देर इज अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड शुड बी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट।
ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चले, उसको बनाया ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए गया है। हाँ, चलो नेक्स्ट। Which constitutional value did the Supreme Court emphasize while linking dignity to education for girls? इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को सुप्रीम कोर्ट ने लिंक किया है विथ द डिग्निटी to education for girls. Options are secularism, fraternity, individuals' liberty या equality of opportunity. बताएं. Very good, very good. The correct answer is individual liberty. Yes, yes, beta. Right to equality is different. Equality of opportunity is different thing. बट यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिबर्टी जो है उसको ज्यादा एम्फसाइज किया गया था ना. सो करेक्ट आंसर शुड बी सी. यस. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. राइट. एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. वैसे ओवरऑल फैशन में तो आज का न्यूज़पेपर काफी मतलब छोटा था. ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं. ऐसे टॉपिक ही थे जो अपन ने पहले डिस्कस कर चुके थे, लाइक यूजीसी, protest, etc., etc. But the one good thing that came out was the fundamental right consideration of menstrual health in schools. So this was good. Make sure इसको properly पढ़ना and get some proper news, correct some data, so that इस पे अगर कभी बात हो या कभी पैसेज आए, क्योंकि एक हिस्टोरिक जजमेंट है. जब आप ऐसी चीजों को फंडामेंटल राइट के फॉर्म में देखते हो, सुप्रीम कोर्ट जब उसे फंडामेंटल राइट बताता है, तो वो क्लैट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट. है ना. तो वो दोनों चीजें जो है वो आपको इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको फॉलो करना. इंडिविजुअल लिबर्टी, दोस्त, लाइक बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरी एक पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी है. राइट. सो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. वन ऑफ देम इज लाइक choosing my partner, right? Choosing my like education, choosing my career, choosing my work ethics. तो ऐसी कई चीजें आती हैं. तो जब भी एक पर्टिकुलर लड़की है, अगर शी इज इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ लाइक कंडीशन, साइकिल में है, एंड इफ शी इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल, और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग कि भाई वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, तो इट्स अ प्रॉब्लम. सो अगर स्कूल उस चीज को करता है और वो वहाँ पे अपनी डिमांड रखती है कि आई नीड पैड्स, आई नीड समथिंग एल्स, कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल की लिबर्टी का ही कॉन्सेप्ट होता है. राइट. तो इंडिविजुअल्स लिबर्टी का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल के पास अपनी खुद की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होती है, कि उसके पास एक ऑप्शन चूज करने के लिए अवेलेबल हो. मतलब अंडर द पर्सनल लिबर्टी ही कैन मूव, ही कैन डू द थिंग्स. तो वहां पे पीरियड्स के लिए भी यही पर्टिकुलर चीज बोली गई है. ठीक है. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Good day, guys. Enjoy. Life में मस्त रहो. पढ़ाई में व्यस्त रहो.